Jackie, could you really be in this town? Oh, sorry, wrong game. The year is 2013. 2013 बहुत ही iconic year माना जाता है गेमिंग में because of the iconic titles that were released in that year. BioShock Infinite, Call of Duty Ghosts, Assassin's Creed Black Flag, Tomb Raider series reboot, Splinter Cell Blacklist, and of course Dawn 2 the game. Oh sorry, मेरा मतलब था The Last of Us. ये सारे गेम्स रिलीज हुए थे 2013 में, लेकिन एक एंड सबसे ज़्यादा आइकॉनिक गेम जो रिलीज़ हुआ था 2013 में, एंड आई एम प्रीटी श्योर वो सबको पता है कौन सा गेम है, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5. दिस गेम इज़ नाउ 11 ईयर्स ओल्ड, लेकिन लोग तो अभी भी ये गेम ऐसे खेलते जैसे कल ही रिलीज़ हुआ हो. GTA 5 is probably one of the greatest games that was ever made, and I don't think लोग कभी भूल पाएंगे the iconicness of this game. लेकिन what if I tell you GTA 5 के रिलीज होने से एक साल पहले, that is 2012 में, there was one another game which followed the core elements of GTA and improved on a lot of the aspects in which GTA games failed to improve on. It kind of beat Rockstar at its own game. And of course अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं कौन से गेम की बात कर रहा हूँ, this game, the one and only game is Dawn 2 the game. Let's go SRK. Sleeping Dogs. The game is Sleeping Dogs. So ये वीडियो में I am going to be talking about one of the better dog type games, that is Sleeping Dogs, and hopefully by the end of the video your friend who keeps on recommending Sleeping Dogs to you can shut the fuck up. अब जिससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट आप इस गेम को GTA 5 से कंपेयर मत करो. 5 का बजट वॉज $250 million एंड मोर देन 1000 डेवलपर्स वर्कड ऑन द गेम, जो स्लीपिंग डॉग्स का केस बिल्कुल नहीं था. आई मीन कंपेयर कर सकते हो. स्लीपिंग डॉग्स ऐसा नहीं कि बहुत ख़राब गेम है. स्लीपिंग डॉग्स होल्ड्स अप रियली वेल अगेंस्ट GTA 5, लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट जानना बहुत ज़रूरी है. This game is set in Hong Kong and you get to play as Wei Shen, who is the second guy I have seen look badass in a banyan or a tank top right after CJ. इस game का concept is very GTA coded. Explore the open world, steal cars, kill pedestrians, avoid cops and do absolutely boring missions. I'll take this one. Good job. Yeah, kick his ass. Just like GTA. लेकिन मुझे ये तो कहना पड़ेगा, ड्राइविंग इन दिस गेम फील्स वेरी फ्लूइड एंड रिस्पॉन्सिव, विच मेक्स एक्सप्लोरिंग द ओपन वर्ल्ड अ लॉट ऑफ फन. दो ग्रेट मैकेनिक्स जो इस गेम के ड्राइविंग में है इज द एबिलिटी टू हाईजैक अ व्हीकल एंड रैमिंग. हाईजैकिंग वाला फीचर मुझे बहुत कूल लगता है. इट फील्स लाइक अ फीचर जो असैसिन्स क्रीड में होना चाहिए था लेकिन स्लीपिंग डॉग्स में है. रैमिंग वाला फीचर इज़ वेरी फनी एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट दिस फीचर इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर ये गेम GTA से इंस्पायर्ड है, देयर हैज़ टू बी रेसेस इन दिस गेम, एंड आई वाज सो हैप्पी दैट रैमिंग वाला फीचर इज स्टिल एप्लीकेबल इन रेसेस बिकॉज दैट मेक्स द रेसिंग सो मच मोर फन. Hi guys, today I'm going to show you how to win races in Sleeping Dogs. Tara Rampam kill. See, this is how you make races fun, dumbasses. The highlight of the game or the best feature of the game, ये एक feature is what makes this game so iconic. The hand-to-hand combat. In case आपको कभी पता नहीं था, the hand-to-hand combat in this game is heavily inspired by Chandni Chowk to China. Like, look at this move and tell me this is not something you can imagine Akshay Kumar doing. But in all seriousness, the melee combat of this game is amazing. The best way I think जिससे मैं इस game का melee combat describe कर सकता हूँ, it's like the combat of Sifu in a GTA setting. एक तरफ जहाँ melee combat of GTA sucks, Sleeping Dogs का melee combat is brutal. आप लोगों को फैन में फेंक सकते हो, टेलीफोन बूथ से मार सकते हो, यू कैन गिव एन एटीट्यूड एडजस्टमेंट, यू कैन बिकम मेस्मर द इम्पेलर एज वेल, एंड मेरा फेवरेट डेड बाय डेलाइट किल. Spider-Man and Batman games wished their combat was this good. Trash games. Thank God the developers took inspiration for this game from Chandni Chowk to China and not from Jackie Chan movies, and nobody can tell me otherwise. Now the shooting in Sleeping Dogs is as good as Chandni Chowk to China, so not good. ये पॉइंट थोड़ा सब्जेक्टिव हो सकता है, लेकिन इन माई 2 प्ले-थ्रूज ऑफ दिस एंटायर गेम मैं एक्टिवली गन यूज़ करना अवॉइड कर रहा था बिकॉज यूजिंग गन्स जस्ट सक दैट मच इन दिस गेम. बट अगेन इट्स अप टू एवरीवन. One fun feature while shooting that you get in this game is that max pain bullet time when you transition from a cover. इस गेम का open world is not that big, लेकिन there is still plenty of side content that a player can engage with.
आप फेवर मिशंस कर सकते हो, विच इज़ लाइक अ शॉर्ट साइड स्टोरी मिशंस विच हेल्प इंक्रीज योर फेस लेवल. फेस लेवल एसेंशियली इज दैट रिस्पेक्ट प्लस GTA सैन एंड्रियास वाला थिंग. Nobody really cares for it. आप गैम्बलिंग कर सकते हो, रेसिंग कर सकते हो, कैन गो आउट ऑन सेवरल डेट्स अनलाइक रियल लाइफ. लेकिन मेरा सेकंड फेवरेट फीचर, द सेकंड फेवरेट फीचर मेरा इन दिस गेम हैज़ टू बी द चिकन फाइटिंग. My cook is the best. अब आप पूछोगे आर्यन फेवरेट फीचर क्या है, एंड इट्स सच अ सिंपल एंड एन ऑब्वियस आंसर. दिस गेम हैज़ कैरियोके एंड जस्ट फॉर दैट आई लव दिस गेम. बाका मिठाई तो नहीं है इस गेम में, लेकिन देयर इज टेक ऑन मी. मुझे पता नहीं कितने पैसे दिए होंगे डेवलपर्स ने ये म्यूजिक का लाइसेंस एक्वायर करने के लिए, बट इट्स डेफिनेटली वर्थ इट. The moment the game starts, boom, we're copying GTA Vice City. Wei Shen, who is the protagonist of the game in case you forgot, is an undercover cop in Hong Kong and has connections to the Triads. जब game start होता है, Wei is set on his goal to infiltrate the Triads and inform the police on their plans. Wei is also driven by revenge because one of the leaders of the Triad gangs killed his sister. लेकिन जैसे ही गेम की स्टोरी प्रोग्रेस करती जाती है, वे हु स्टार्ट्स आउट एज अ बीट एम अप गाय इन द ट्रायड्स गैंग स्टार्ट्स टू राइज इन द रैंक्स एंड बिकम्स अ लीडर ऑफ द गैंग. वेरी गुड फेलस कोडेड, आई नो. ही स्टार्ट्स केयरिंग अबाउट हिज फेलो गैंग मेंबर्स एंड फ्रेंड्स. और फिर गेम के एक पॉइंट पे इट बिकम्स अ क्वेश्चन ऑफ लॉयल्टी एंड बिट्रेयल. Will Wei stay loyal to the Triads and betray the police, or is it going to be the other way around? इस गेम के साइड कैरेक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं, लाइक जैकी जो वे का सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड है, इंस्पेक्टर टेंग, विंस्टन हु इज द लीडर ऑफ द ट्रायड गैंग, विंस्टन्स मॉम जो इस गेम की स्कैरिएस्ट कैरेक्टर है, देन देयर इज डॉग आइज, अंकल पो, बिग स्माइल ली एंड मेनी मोर. Fun fact about the game, there are plenty of iconic voice actors in this game, और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है the voice actress for Amanda. Excuse me, do you speak English? I like to think so. Well, enough to get by anyways. You? Yeah, Wait, what do you mean? Oh, yeah, I speak English. Who is voiced by Emma Stone. Emma Stone पता है? La La Land, Poor Things. नहीं याद आया? अब याद आ जाएगा. Emma Stone from Harry Potter. There you go. अब याद आया. इस गेम की स्टोरी कुछ माइंड ब्लोइंग या एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है. इट्स अ प्रीटी डिसेंट गैंगस्टर स्टोरी विद प्लेंटी ऑफ ट्विस्ट्स एंड बिट्रेयल, बट डेफिनेटली गेम प्ले इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन द गेम्स नैरेटिव. Now since I have PTSD from my GTA 4 वाला video for not playing the DLC, I made sure that I play the DLC for this game. दो DLC हैं, The Year of Snake and Nightmare at North Point. And I am here to tell you, इस गेम के DLC कुछ ज़्यादा खास नहीं है. Definitely no GTA 4 level DLC. Nightmare in North Point feels like one big side mission in a Yakuza game, which is just funny and does not make any sense at all. The second DLC, Year of the Snake, is brain dead. You get to actually play as the police. No undercover shit this time. But पूरे टाइम वे शेन को पुलिस यूनिफॉर्म में देख के मुझे बस चंकिंग एक्सप्रेस की याद आ रही थी. अब आप सोच रहे हो कि अगर ये गेम इतना ही अच्छा है तो कभी इस गेम का सीक्वल क्यों नहीं आया? वेल, उस सवाल का आंसर इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड. इट्स अ बिट ऑफ बोथ अ येस एंड अ नो. Nobody knows the exact reason कि Sleeping Dogs को कभी sequel क्यों नहीं मिला. The developers of Sleeping Dogs, United Front Games, developed an early version of Sleeping Dogs 2 which had like co-op missions in it and a separate storyline and everything, and pitched it to Square Enix. Square Enix is the publisher of Sleeping Dogs, and Square Enix looks at Sleeping Dogs 2 and goes like, ये क्या भी बकवास है, इसको फंड नहीं करने वाला मैं. And the project of Sleeping Dogs 2 got abandoned straight away. जब यूनाइटेड फ्रंट गेम्स का स्लीपिंग डॉग्स 2 कैंसिल हो गया, दे डिसाइडेड टू टेक अ बाइट ऑफ द फॉरबिडन फ्रूट, फ्री टू प्ले ऑनलाइन मॉडल, एंड दे रिलीज द गेम ट्रायड वॉर्स, जो डेफिनेटली किसी गेम के साथ compete करने के लिए नहीं रिलीज हुआ था. Triad Wars would take place on the same map as Sleeping Dogs with the same combat system with very minimal and a low amount of story. इस गेम में हर एक प्लेयर का गोल था टू एस्टैब्लिश देयर ओन टेरिटरीज इन अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द मैप एंड टू प्रोटेक्ट देयर टेरिटरीज फ्रॉम अदर अटैकिंग प्लेयर्स. If I had to explain this in simple words, do you guys remember how in GTA San Andreas at the end of Los Santos, just before you go to the countryside, Los Santos gets divided into the 3 groups, Ballas, Grove Street and that yellow guys, I don't remember. Just so you remember how you go into their territory, capture their territory, and then that territory is yours. The same idea has been applied for Triad Wars.
And as you would guess, this game did not succeed at all. Triad Wars failed miserably. And then the game shut down in 2016, and subsequently in the same year, United Front Games also got shut down. So, F's in the chat for United Front Games. Sleeping Dogs continues to be a unique game till this date. Even after 12 years of its release, अभी भी लोग इस गेम की तारीफ करते रहते हैं and keep recommending it to each other. और ये बहुत बड़ी बात है for this game. And अब रही बात इस गेम की sequel या remake की, I'm pretty sure वो ज़्यादा दूर है नहीं. Looking at the current state of the industry where everything is remakes and sequels, I'm pretty sure Sleeping Dogs का remake and sequel भी आपको देखने मिलेगा. Now, do I wish personally कि वो हो? Absolutely not. Some games can be left alone. उनको रीमेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है because they still can compete with some modern AAA titles जो कुछ कंपनीज रिलीज करती हैं. अगर आपने पहले कभी स्लीपिंग डॉग्स नहीं खेला है, आई हाईली रिकमेंड दैट यू प्ले दिस गेम बिकॉज ये गेम इज़ एन एक्सपीरियंस टू से द लीस्ट. एंड देखा जाए ये गेम ना ही सिस्टम पे उतना हैवी है और फेयरली सस्ता भी है. मुझे ये गेम स्टीम के सेल पे 100 रुपये का मिल गया था केवल. सो आई हाईली रिकमेंड दैट यू प्ले स्लीपिंग डॉग्स एंड सो दैट एंड द बिगेस्ट रीजन वाई यू शुड प्ले स्लीपिंग डॉग्स इज दैट वन फ्रेंड ऑफ योर्स विच कीप्स ऑन रिकमेंडिंग स्लीपिंग डॉग्स टू यू कैन शट द फक अप.